सो रिज्यूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब हम एक रिमोट जॉब को ढूंढने जाते हैं। और इस वीडियो में आई एम गोना बी शेयरिंग माय रिज्यूम जिसने हेल्प करी टू गेट माय फर्स्ट रिमोट जॉब। एंड ऑफ कोर्स रिज्यूम इज द फर्स्ट लेवल ऑफ चेक जो कि आपके प्रोफाइल के ऊपर होता है। एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रियलाइज काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो कि मैं अपने रिज्यूम में कर रहा था, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंज करी इन माई रिज्यूम। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि दिस रिज्यूम इज़ लाइक अ परफेक्ट रिमोट रिज्यूम ऑफ ड्रीम लैंड, बट दिस इज अ रिज्यूम जिसके अंदर कि मैंने बहुत सारे चेंजेस करे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे लिए वर्क करी। सो आई एम जस्ट गोना शेयर दैट एंड होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, एंड यू कैन डू these changes in your resume and land your next remote job. So this is my resume. Basically it's just a two-page resume, and I think 2 pages is good अगर आपके पास कुछ experience है, and if you're a fresher I think 1 page is good enough. 2 page तक जाना ही नहीं चाहिए, because all the companies that you are actually applying to are gonna take whatever you have on your resume, और कोई भी second page तक usually नहीं जाता unless you have a lot of experience. So let's go and see. Basically the first paragraph of my resume is just a line about me कि मेरा क्या experience रहा है, कि मेरी क्या proficiencies थी, and I think all these things you can just ask ChatGPT to create, and that is the easiest and the best grammatical way आजकल to create anything. And second thing is I have an image at the top of my resume जो कि I feel is a very important thing. Always have your image. That has been my go to कि मैं image अपनी लगाता हूँ. Any good photo that you have that looks थोड़ी सी professionally clicked, just put that up in your resume, because it will help the recruiters see your face and know कि इस resume के पीछे इंसान कौन है. And just it's just the facial connect is just something that I really appreciate कि, and that I feel works also. So next bold letters में मेरा नाम है पुलकित भुट्टानी, which you already know. And उसके बाद में, so let's just पहले हम बात करते हैं about the right section of my resume. Then we will come to the left section कि हम कैसे अलग अलग experience रखते हैं. Basically on the left section is all the experiences that I have, और on the right section यहाँ पर मैंने थोड़े से changes करे थे about कि क्या क्या मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं जिसके ऊपर मैंने काम करा है, या फिर माई कॉन्टैक्ट मी सेक्शन, या फिर माई एजुकेशन सेक्शन. So under the skills section, I have basically categorize कर रखा है अलग अलग चीज़ों को. For example languages में TypeScript, JavaScript, backend library and frameworks. अब I feel rather than सब चीज़ें एक साथ लिख देना, it's just good to categorize it under each of them, ताकि for example if कल को आपका रिज्यूम कोई फ्रंट एंड डेवलपर देख रहा है, सो ही विल ओनली बी लुकिंग एट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स या फिर लैंग्वेजेस, या फिर अगर कोई बैक एंड डेवलपर देख रहा है तो ही विल हैव अ क्विक हाईलाइट कि हाँ ठीक है, द पर्सन हैज वर्कड ऑन डॉट नेट, या फिर द पर्सन हैज वर्कड ऑन जावा. एंड सेम वे डेटाबेसेस, बेसिकली द कैटेगराइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड इट हैज वर्कड फॉर मी. फिर उसके बाद में आता है कॉन्टैक्ट मी सेक्शन, विच इज ऑल्सो समथिंग दैट आई फील कि आपको ऑलमोस्ट जो भी प्रोफेशनली अवेलेबल टूल्स हैं उनके लिंक्स डालने चाहिए. एंड लिंक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो भी रिक्रूटर है, दे रियली वांट टू, उनके पास इतना टाइम होता नहीं है टू एक्चुअली स्पेंड ऑन योर रिज्यूम. दे आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ रिज्यूम्स, और इफ दे हैव अ लिंक जिसमें कि क्विकली आपके लिंक पे कोई भी क्लिक करके they can just go to your LinkedIn page, या फिर they can quickly go to your GitHub page. So that is something जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, and it actually gives the feeling कि आप सामने वाले रिक्रूटर का टाइम बचाना चाहते हो, rather than him going on Google या फिर सर्च करे आपका नाम and then going to LinkedIn or going to your GitHub. Same way, my email address is also hyperlinked. So as soon as someone clicks on it, it just opens up a email ka tab and puts it in the to. So there are a lot of ways you can do it. Just a simple hyperlink on an email does that. तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. And उसके बाद में is my university, where did I study, what course did I did. Just all your education should go here. Uh, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए. योर रिज्यूम कैन बी इन एनी फॉर्मेट. इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर कि कैसा मेरा रिज्यूम है, एंड सो यू कैन जस्ट टेक ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव हैड ऑन दिस वे ऑफ गेटिंग टू द पॉइंट आई एम. सो नेक्स्ट सेक्शन इज एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस सेक्शन में आई वर्क विद 3 to 4 कंपनीज, तो मैंने वो सब का लिख रखा है. एंड
व्हाट आई हैव मोस्टली डन इज कि जो भी कंपनीज में आई हैव वर्कड, आई हैव जस्ट मेड श्योर कि मैं एक लिंक लगाऊं उस कंपनी के वेबसाइट का, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिक्रूटर्स एंड एचआरस डोंट रियली नो द नेम ऑफ द कंपनी, तो वो जाकर के रिसर्च करना चाहते हैं अबाउट किस कंपनी में आपने काम करा है. सो जितना हम उनके लिए प्रोसेस ईजी और क्विक बनाएंगे विल हेल्प अस ओनली. सो एक लिंक डालने से इट्स नॉट अ ह्यूज वर्क फॉर अस, बिकॉज रिज्यूम पे हमें एक्चुअली थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए. सो लिंक डालने से द एचआर विल क्विकली बी एबल टू सी. देन मेरा रोल है, एंड देन आई हैव ऑल्सो एडेड कि कौन से क्लाइंट के साथ मैंने काम करा था व्हेन आई वाज इन दिस कंपनी, एंड थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट कि क्या मैंने काम करा था. देन कम्स द अदर पार्ट अबाउट जो भी पॉइंट्स हैं अबाउट माय थिंग्स दैट आई वर्कड उस कंपनी में, या फिर उस टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग इन दैट कंपनी. सो हियर व्हाट आई हैव एडेड इज दो मेजर पॉइंट्स, बट ऑल्सो आई हैव हाईलाइटेड अ फ्यू थिंग्स. सो यहाँ पर मैंने कुछ कंपोनेंट्स को रिफैक्टर करा था, एंड इट हेल्प्ड इन क्लीनिंग अप द कोड बेस अ लॉट. तो मैंने वो मेंशन कर रखा है, एंड आई हैव एक्चुअली हाईलाइटेड इट, मेड इट बोल्ड, ताकि इफ समवन इज गोइंग थ्रू दिस रिज्यूम वेरी वेरी क्विकली, तो they will be able to see कि हाँ ठीक है, the person did that, the person did that. If you see the other section की improved onboarding time by 30%. So these small things जो कि आपने करी थी और जो भी आपके result थे. So basically this is more of a result focused resume, कि you're trying to focus on the result जो भी आपने दिया था in that role, in to that company, and क्या आपका contribution था which actually helped the company grow, या फिर क्या चीज़ें आपने improve करी थी. So these are the points that should be highlighted, और ऐसी चीज़ें actually help the recruiter to know कि how good of a candidate you are. And after that, basically I made sure कि मैं 2 या 3 से ज़्यादा points नहीं लिखूं in any of my company's experiences, because 3 या 4 पॉइंट से ज़्यादा फिर द रिज्यूम स्टार्ट्स टू गेट टू द नेक्स्ट पेज, या फिर बहुत बड़ा लगने लग जाता है. इट शुड नॉट ऑल्सो बी दैट लेंदी. 2 या 3 पॉइंट्स को भी वी कैन जस्ट फीड इट टू चैट जीपीटी, और उससे हम उसे 1 या 2 पॉइंट कर सकते हैं. सो बेसिकली कीप इट मिनिमल, and the other point that I made sure was to always keep it result oriented. फिर द लास्ट सेक्शन दैट आई हैव ऑन माय रिज्यूम इज आल्सो टेक स्टैक, कि किस टेक स्टैक पे मैंने उस टाइम पे काम करा था, एंड व्हाट वाज माय एक्चुअल टेक्नोलॉजीज दैट आई वर्कड ऑन. सो दिस आल्सो हेल्प्स रिक्रूटर टू नो कि इन द कैंडिडेट वर्कड ऑन विच टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग दिस टाइम, और जिस प्रोजेक्ट पे इन्होंने वर्क करा था, which technologies were those. So this was my resume, and I like to keep it minimalistic. I don't want like to add any chunky parts. बहुत इधर उधर लगाना मेरे को पसंद नहीं है, because I just feel it's more beautiful this way. And I just wanted to share my resume ki which was the resume and what points I added to my resume, ऐसे क्या चीज़ें थी over the time which I added on my resume that helped me get my remote job. And I hope this was helpful for you, and I hope आप भी ये points को implement कर सके अपने resume में, और you land your next dream job. So thanks a lot for watching this video, and I am doing this remote work series जिसमें I'm adding more videos around remote work, and how to get a better job, how life is in when you're working remotely, या फिर how do you travel and work. So I want to make videos around all this, and I feel these kind of videos will be helpful to the people who are actually aspiring to be remote workers in future. और थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो.